Hello everybody and welcome to this video. We had promised to bring out the most comprehensive video on Article 370. ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट याद रखिएगा ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किया गया है, सो ध्यान से सुनिएगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और एमसीक्यूज वर्दी फैक्ट्स भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एग्जैक्ट आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू ब्रिंग यू मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। यू कैन वॉच दिस वीडियो बाय इंक्रीजिंग द प्लेबैक स्पीड एज पर योर कन्वीनियंस। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हाउ इट लेड टू आर्टिकल 370. In the second part, we have briefly discussed the events after enacting Article 370 and the abrogation of Article 370 that took place in 2019. In the third part, we will talk about the issues raised before the Supreme Court and the court's verdict. तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को कहानी की तरह समझिएगा। तो कहानी शुरू होती है इन 1845-46 जब पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था। इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर वैली को सिख्स से छीना था, then later sold this valley to the Maharaja of Jammu, Ghulam Singh, for rupees 75 lakh. Initially, Jammu and Kashmir remained as a princely state under subsidiary alliance with the British East India Company. Yani rulers of J&K would pay the British company and in return, the company would protect Jammu and Kashmir from external threats. With time, it came under the British Crown. Ultimately, after the Indian Independence Act 1947, Jammu and Kashmir was one of the 562 princely states under the suzerainty of British Crown. सुज़ैरेनिटी का मतलब है द राइट ऑफ अ कंट्री टू रूल ओवर अनदर कंट्री। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा था, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लॉर्ड माउंटबैटन स्टेटेड दैट ऑल प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वुड रिगेन फुल सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड दैट दे वर फ्री to join either the dominion of India or Pakistan, or they could even choose to remain independent. लॉर्ड माउंटबैटन ने प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के आगे 2 इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। एक था द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और दूसरा था द स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। अगर कोई प्रिंसली स्टेट इधर पाकिस्तान या इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था, देन इट हैड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन to ensure its integration. लेकिन अगर कोई princely state standstill agreement sign करता है, then that would indicate that it wants to suspend the talks of integration for a specific time period and for the time being maintain status quo. The nation with whom a standstill agreement was signed could not exercise its political authority over princely state. आपको शायद पता होगा that most of the princely states with an exception of few acceded to the dominion of India. और इसके लिए क्रेडिट जाता है टू होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल and the Secretary to Ministry of States, Mr. V.P. Menon. However, some princely states put up a resistance, such as Hyderabad, Travancore, Junagadh, as well as Jammu and Kashmir. Soon, most of these states were also integrated into India due to their geographical proximity. लेकिन the problem of geographical location कश्मीर के साथ नहीं था. Kashmir was a Muslim majority state ruled by a Hindu ruler. Maharaja Hari Singh was indecisive as to which dominion to join. He had signed a standstill agreement with Pakistan. Mahatma Gandhi, who visited Kashmir in August 1947, wanted the people of Kashmir to decide the fate of Jammu and Kashmir. Sheikh Abdullah, who would later go on to become the chief minister of J&K, wanted the state to remain independent of both Pakistan and India. However, post-independence, certain situations arose. Jammu ने देखा influx of refugees from West Punjab into Jammu. Maharaja Hari Singh के against Poonch revolution हुआ. And finally, when Pakistan schemed and supported armed tribals who entered Kashmir, ये सब चीज़ force किया महाराजा हरी सिंह को हेल्प के लिए अपील करने के लिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस इज व्हेन वीपी मेनन विद द सपोर्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला गॉट द महाराजा टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. कंडीशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
condition were that India would help Jammu and Kashmir to get rid of the armed men sent by Pakistan, and in return, J&K would be a part of India. J&K would later hold a plebiscite when the law and order situation allowed the same. The Indian Parliament could legislate for Jammu and Kashmir only on three subjects, that is, defense, external affairs, and communications. So, after the instrument of accession was signed, Pandit Jawaharlal Nehru ने N. Gopalaswamy Iyengar को responsibility दिया था to draft what we know today as Article 370. He gave the special status for Jammu and Kashmir, saying that the time was not right for full integration due to the circumstances of the state. Interestingly, Article 370 was passed unanimously except for one, मौलाना हसरत मोहानी, जो चाहते थे कि कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो बाकी प्रिंसली स्टेट्स को भी दिया जाए. तो जम्मू एंड कश्मीर कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. So along with its constitution, Jammu and Kashmir was also allowed to have its own flag and no outsiders were allowed to own land there. आप पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर इतना क्यों डिस्प्यूट? इसका पहला कारण है पाकिस्तान, which is an Islamic state, wanted the Muslim majority population, which is Kashmir. बट इम्पॉर्टेंटली कश्मीर बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है क्योंकि ये एक रूट प्रोवाइड करता है टू द सेंट्रल एशियन स्टेट्स. ऑल्सो प्लेसेस लाइक सियाचिन ग्लेशियर अलाउज इंडिया टू स्पाई ऑन पाकिस्तान एंड चाइना. प्लस जो नेशन J&K को कंट्रोल करेगा वो इंडस रिवर को भी बेटर हार्नस कर सकता है फॉर देयर ओन बेनिफिट. This is the end of part 1, which discusses the origin of Article 370. Please check out the second part of the video, which deals with the politics of this controversy and the events which led to the abrogation of Article 370. Please like, share and subscribe this video on YouTube and follow us on Instagram.